So today's problem the day question 2976 minimum cost to convert string. You are given two zero index string source and target and both of length and n consisting of lowercase English letter, and you are also given two zero index character array original and change an integer array cost where cost I represent the cost of changing the character original I to the character change I. Okay, and you start with the string source. In one operation, you can pick a character from the string and change it to character y at the cost of z. If there exists any index j such that cost j is equals to j and original j equals to x and change j y, right? Return the minimum cost to convert the string source to the string target using any number of operations. If it is possible to convert source to target, then return -1. Note where there may exist indices ij such that original j is equals to original I and change I is equals to, then the example source ABCD and target ACBA original ABCCED, right? This was the example. Okay, so like how do like our introduction, लाइक इसमें हमें दिया गया है सोर्स स्ट्रिंग और एक टारगेट स्ट्रिंग दिया है और तीन एरे दिए ओरिजिनल चेंज और कॉस्ट एंड ओरिजिनल चेंज और कॉस्ट दे रखे हैं इसने एरे, मतलब लाइक हमें ओरिजिनल आई इनटू चेंज आई कन्वर्जन कर सकते हैं जिसको कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट आई हो जाए। फिर हमें निकाला सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करके मिनिमम टोटल कॉस्ट के साथ निकालना है। अगर किसी कैरेक्टर को कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है तो रिटर्न -1 कर देंगे। सो कन्वर्जन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, लाइक ए इंटू बी इंटू सी, अगर ए इंटू बी और बी इंटू सी अलाउड हो। करेक्टर सिर्फ ए टू जेड है, टोटल 26 नोड, तो ग्राफ प्रॉब्लम है, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ कर देंगे। और हर करेक्टर इंडिपेंडेंट कन्वर्ट हो रहा है सोर्स आई को इनटू टारगेट आई। सो आवर अप्रोच इज लाइक एल्गोरिथम में one second, let me zoom, right? So also like फ्लोइड फ्लोइड मार्शल से कर देंगे सॉल्यूशन वाले। लेट मी कमेंट डाउन फ्लोइड मार्शल एल्गोरिथम, राइट। अब क्योंकि नोड्स 26 है तो सारे स्मॉल होंगे और ऑल पेयर्स सॉर्टेड पाथ चाहिए, राइट। और ग्राफ का आइडिया इज नोड इज इक्वल टू करेक्टर ए टू जेड और एज कन्वर्शन विद कॉस्ट है। सो अगर अप्रोच करें तो फर्स्टली इस अप्रोच में पहले तो डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। सो डिस्टेंस मैट्रिक्स कैसे होता है, डिस्टेंस आई और जे इक्वल्स टू मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट
खैर आई हो जाएगा, खैर आई इंटू में कन्वर्ट कर देंगे खैर जे से, राइट। सो निश्चित डिस्ट एरे आई और एरे आई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बाकी सब इक्वल्स कर देंगे आई एन एफ के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप, हम गिवन कन्वर्जन को फिल कर देंगे। लाइक अगर सेम कन्वर्जन मल्टीपल्स टाइम है तो मिनिमम कॉस्ट ले लेंगे। एंड थर्ड में वही फ्लूइड मार्शल लगा देंगे, राइट। एंड फोर्थ इज लाइक कन्वर्ट कर देंगे सोर्स को टारगेट, राइट। लाइक हर इंडेक्स आई के लिए अगर सोर्स एरे आई इज इक्वल टू टारगेट आई देन कॉस्ट इज इक्वल टू 0, और एल्स है तो अगर डिस्ट सोर्स आई टारगेट आई इज नॉट इक्वल टू आई नेफ देन रिटर्न माइनसन कर देंगे। लेट्स डू द कोड, राइट। सो क्लास पब्लिक मिनिमम कॉस्ट हो गया, टारगेट हो गया, इंट कॉस्ट सब हो गया, राइट। आफ्टर दैट लाइक इंटीजर एल ले लेते हैं इज इक्वल टू 26। लाइक अगर एन 26 ले गया है, इंटीजर एन तो 26 ले लिया, लॉन्ग आई एन एफ कर देते हैं, लॉन्ग आई एन एफ इक्वल्स टू लॉन्ग एल ई 18, राइट। एल ई नहीं, and we have to step on distance matrix, right। distance matrix में लिखते हैं long dist is equals to new long n, or n creating a loop for int I is equals to 0, I n or I increment. Then we do arrays dot fill dist inf distance array I और array I ले लेते हैं equals to 0। स्टेप 2 कर देते हैं, गिवन फिल कर देते हैं गिवन कन्वर्जन्स, राइट। सो फॉर int I is equals to 0, I लेस देन ओरिजिनल लेंथ कर देते हैं इंक्रीमेंट, और int u is equals to original array I minus 0 minus e कर देते हैं, और integer v is equals to change array I minus and dist u stands v equals to math dot main dist u and v cost I ले लेते हैं। and now step 3 move
फ्लोइड वर्सल एल्गोरिथम लगा 4 in k to 0 k less than n and k increment, and again loop 4 int I is equals to 0 I less than n I increment, and 4j के लिए कर देते हैं 4 int j is equals to 0 j greater than n j increment. अब डिस्टेंस ले लेते हैं. इफ distance I and k plus distance k and j less than distance I and j, distance I and j is equals to distance I और k ले लेते हैं प्लस डिस्टेंस k j, and like one second that then हमें टोटल कॉस्ट निकालनी, राइट. सो सेकेंड टोटल कॉस्ट हो जाएगी लॉन्ग आंसर इज इक्वल्स टू 0 और int I is equals to 0 I less than source dot length I increment, int s is equal to source dot char at I हो जाएगा माइनस e और int t ले लेते हैं target dot char at I minus a. If like distance s in s and t will inf है, then we do return -1 as per the quotient, and answer plus equals to dist s and t, and turn answer कर देते हैं. Let's see it's running or not. Here the compiler error 38. Run submit कर. Now it is some 200 days. Okay. Oh, so here